Okay, Assalamu alaikum students. So today we are going to solve O-level physics, May June 2025, paper 2 variant 1. Paper 2 का variant 1 May June 2025 for O-level physics. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Figure 1.1 shows a skydiver falling vertically through air. Actually, we have a skydiver falling vertically through air. Okay, no problems in that. In the first part of the fall, her speed increases and her acceleration decreases. In the second part of the fall, the speed is constant. तो बेटा ये जो स्काई डाइवर हैं वो दो पार्ट्स में फॉल कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में स्पीड इंक्रीज हो रही है बट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है. दिस इज पार्ट वन. सेकेंड पार्ट में क्या है? स्पीड इज कांस्टेंट. ओके. On figure 1.2, sketch the speed time graph for the skydiver. On your graph, mark one point where the speed of the skydiver is increasing with an A, and one point where the speed of the skydiver is constant. Mark that with a point B. Okay. So बेटा फर्स्ट चीज देखो. फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है. दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ. डू यू रिमेंबर अ की पॉइंट? क्या आपको एक की पॉइंट याद है? ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता था? ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ यूज्ड टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन. ऐसा की पॉइंट याद है? पढ़ाया था मैंने. नाउ in the first part or for the first part speed increases, however acceleration decreases. Acceleration decrease हो रही है for the first part. That means the gradient of the speed time graph for the first part will also decrease. If the gradient of a speed time graph is decreasing for the first part, जब भी gradient decrease हो रहा होता है, which type of a curve do we draw? Whenever gradient is decreasing, we draw a decreasing curve. Okay. So first part के लिए हम क्या draw कर देंगे बच्चे? Decreasing curve like this. Yeah. Let's mark it with point A. Now, let me do one thing to better organize it. Let's do one thing. Let's write it here कि ये हमने पार्ट ए की वर्किंग की है या फिर जर्नी ए की वर्किंग की है. लेट्स राइट इट हियर. ओके. सो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं. दिस इज द वर्किंग फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. पार्ट वन ऑफ द जर्नी. ओके. बेटा पार्ट टू में क्या हो रहा है? योर स्पीड इज कांस्टेंट. इफ योर स्पीड इज कांस्टेंट, हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ? Probably a horizontal line like this. Always remember constant speeds किस तरह represent होती हैं बेटा? Constant speed are represented with an horizontal line like this. Simple. Nothing complicated. ये आ गई आपकी horizontal line से constant speed. इसको join in कर दो बच्चों यहाँ पे. This is your line B. Simple. Explain how the graph shows that the acceleration decreases as the speed increases. बेटा हमने बताना है कि ये ग्राफ किस तरह शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज द स्पीड इंक्रीजेस. सो व्हाट विल वी से? द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, यू विल से, ये जो वर्किंग यहाँ पे की है ना पार्ट वन में, वही लिख देना. यू विल से द ग्रेडियंट. लेट्स जूम इन अ बिट so it's better visible to all of you. We have to tell how the graph shows that acceleration decreases as the speed increases. So you will say gradient of speed time graph. Gradient of speed time graph is equal to acceleration as speed increases, gradient decreases. Hence, acceleration क्या होगी? Acceleration also decreases. Simple. Let's further move ahead. During the first part of the fall, there is a resultant vertical force acting downwards on the skydiver. ठीक है. तो बेटा इसका मतलब ये है कि लेट्स से दिस इज द स्काईडाइवर. ये आ गया आपका स्काईडाइवर. ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉल, मतलब पार्ट वन ऑफ द जर्नी,
पार्ट वन ऑफ द जर्नी में क्या हो रहा था? स्पीड इंक्रीज हो रही थी, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही थी। ओके, ड्यूरिंग द पार्ट वन ऑफ द जर्नी देयर वाज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, लाइक दिस। ओके, वन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइवर वाज वेट। अच्छा जी, एक फोर्स जो है जो डाइवर पे लग रही थी, दैट वाज वेट। लेट मी मार्क दैट, या लाइक दिस। बेटा, कैन यू गेस व्हाट विल बी द अदर फोर्स? कैन यू गेस व्हाट विल बी द अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर इन पार्ट वन? हाँ जी, एनी जीनियसेस? कैन एनीवन इन द चैट गेस के पार्ट वन में अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही होगी? कैन एनीवन गेस व्हाट विल बी द अदर फोर्स और व्हाट विल बी द सेकंड फोर्स एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर? देखो, एक तो वेट की फोर्स एक्ट कर रही है और वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। कैन यू स्टेट द नेम ऑफ द अदर वर्टिकल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द स्काई डाइवर? Now, if you look closely, what is happening? The skydiver is falling through air. बेटा, जब भी आप एयर के थ्रू फॉल कर रहे होते हो, देयर इज अ फोर्स नोन एज एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन यू। जब भी आप एयर के थ्रू फॉल कर रहे होते हो, देयर इज अ फोर्स नोन एज एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन यू। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अ शॉर्ट मास्टर क्लास how to find the direction of air resistance. AR for short. एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं बेटा? अगर एक स्काई डाइवर या ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, इफ ए स्काई डाइवर और ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, air resistance acts upward. If a skydiver or an object is moving upward, the air resistance acts downward. तो एयर रेजिस्टेंस का काम क्या है, देख रहे हो? इफ यू आर मूविंग अपवर्ड इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इफ यू आर मूविंग डाउनवर्ड इट इज एक्टिंग अपवर्ड। एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज opposes motion. Air resistance always opposes motion. Let's move ahead. Can you mark the air resistance here? Yeah, like this. State the name of the other vertical force that acts on the skydiver. Air resistance. Easy peasy, lemon squeezy. Let's further move ahead. Okay, so let's see the next part. Explain why the resultant force eventually becomes zero. Now we have to explain why the resultant force eventually becomes zero. बेटा देखो, होता ये है कि आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है, योर एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to your speed or your velocity. Now, as you can see, your speed is increasing. As your speed consistently increases, air resistance increases. As air resistance increases, upward force of air resistance will equal to the downward force of weight. The resultant vertical force will become zero. So you can write it here. You can say air resistance. Let's zoom in a bit. ये तो 2 मार्क का सवाल है, मैं आपको 3 मार्क का आंसर लिखवा देता हूँ. Air resistance is directly proportional to velocity or to speed. As speed increases, air resistance AR increases. Okay. When air resistance AR is equals to weight, the resultant vertical force becomes zero. The resultant vertical force becomes zero. Simple, nothing complicated. Here, let's move on to part D. अब क्या लिखा हुआ है बेटा? At one instance, the vertical force on the skydiver is 400 Newton downwards. At the same instant, the wind causes a horizontal force of 100 Newton towards the right. Okay, so कौन कौन सी दो forces लग रही हैं? First of all, you have a downward force of 400 Newton. Okay.
and a force of 100 Newton towards the right, like this. Okay, okay, okay. Nothing complicated here. Okay. At the same instant, okay. Draw a vector diagram to determine the resultant of the 400 vertical force and 100 Newton horizontal force. Okay. Place an arrow on all of the forces to show their direction. Okay. Determine the magnitude of the resultant force and its direction to the vertical. Okay. So we have to determine the magnitude of the resultant force and the direction towards vertical. Okay. First of all, let's start seeing these two vectors. This is the 100 Newton vector acting towards the right, 400 Newton vector acting towards the downside. Can you mark the head and tail of these vectors? Yes, this is the tail. This is the head. This is the tail. This is the head. Can you see head to tail rule is being satisfied? Can you see the head of one vector is connected to the tail of another vector? Head to tail rule is being satisfied. If the head to tail rule is being satisfied, can you mark the resultant vector? बेटा अगर हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो कैन यू मार्क द रिजल्टेंट वेक्टर यस रिजल्टेंट वेक्टर गोज फ्रॉम द टेल टूवर्ड्स head. This is your resultant vector. Can you calculate this resultant vector? Yes, using Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Okay. So you have to calculate hypotenuse, that is resultant square, is equals to base, that is 100 square, plus perpendicular, that is 400 square. Resultant comes out to be 410 Newton. Simple as that, nothing complicated here. I have done nothing. I have just squared the values, added them, and taken an under root. If you want me to do much more in depth, अगर मैं और ज़्यादा depth में चले जाऊँ, तो let me do it like this. Resultant square is equals to 17000. Resultant comes out to be what? Taken under root. Resultant comes out to be 412 Newton. If you want to give your answer till three significant figures, बेटा अगर three significant figures पे आंसर लिखना है आप ये भी लिख सकते हो. If you want to write your answer till two significant figures, you can write 410 Newton as well till 2SF. Now you have to calculate the angle to the vertical. Angle to the vertical. How should I calculate this, sir? Whenever you have to calculate the angle to the vertical, you basically have to calculate the angle with the y-axis or with the vertical line. Which one is the vertical line? Pink line. बेटा इसके साथ resultant vector का क्या angle है? ये theta. How will you calculate this? 90 degree and theta are on the same side. ये क्या हो जाएगी आपकी base? बेटा जिस साइड पे 90 डिग्री और थीटा एंगल होते हैं वो होती है बेस. जिस साइड पे सिर्फ 90 होता है वो हो गया आपका परपेंडिकुलर. ओके, कैन यू कैलकुलेट इट? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है अभी 100, बेस क्या है 400. थीटा निकाल लोगे, थीटा कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 1/4. कैन एनीवन कैलकुलेट दिस आंसर? Tan inverse 0.25. This comes out to be 14 degrees as your angle. Simple as that, nothing complicated. इसमें दो बातें याद रखने वाली हैं. जब भी वर्टिकल के साथ एंगल निकालें यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल विद द वाई एक्सिस और द वर्टिकल लाइन. जब भी आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना है यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल विद द एक्स एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल लाइन. सिंपल. Let's see this. State the principle of moments. Principle of moments क्या कहते थे? For an object to be in equilibrium, the sum of anti-clockwise moments about a pivot must be equal to the
sum of clockwise moments. Simple, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. An airline passenger wishes to check the weight of a suitcase. अच्छा जी, एक airline passenger को weight of a suitcase check करना है. That he carries as hand luggage on an aeroplane. Okay. He uses a uniform plank of wood pivoted at the center as shown in figure 2.1. Okay. The plank is balanced with the suitcase on one side of the pivot and three cases of bags of sugar of mass 2 kg on the other side. तो बेसिकली बेटा क्या है, आपके पास 3 bags of sugar हैं, each of 2 kg on one side, and you have a suitcase on the right hand side. The distances are shown in figure 2.1. Okay. Calculate the weight of one bag of sugar. बेटा weight किस तरह निकालोगे one bag of sugar का? Weight is equals to mg. मास क्या है 2, g क्या है 9.81. क्या weight निकाल लोगे? जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे. 2 into 9.81. This comes out to be 19.62 as your weight. अब ये आंसर 4 significant figures तक है. This answer is still 4 significant figures. Always make sure that your answer should either be 3SF or 2SF. If I converted it till 3SF, this will become 19.6. अगर 2SF पे convert करूंगा तो 20 Newton हो जाएगा. Either one is correct. I am writing 19.6 because I like to give my answer till 3 significant figures. अब आगे देखते हैं. The maximum weight of a suitcase that can be carried on the aeroplane is 67 Newton. Okay. Determine whether the weight of the suitcase exceeds the maximum allowed. Show a calculation in your answer. बेटा basically हमने क्या करना है? We have to calculate the weight of the suitcase. We have to calculate the weight of the suitcase and we have to see whether it exceeds 67 Newton or not. Okay. किस तरह करेंगे? First of all, you need to realize that the plank is balanced. अब सर बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस इज एन अदर वर्ड फॉर इक्विलिब्रियम. व्हाट डज इक्विलिब्रियम मीन सर? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. इक्विलिब्रियम का बच्चे मतलब क्या होता है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. नाउ इफ यू रियलाइज दिस इज 2 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 2 kg, टोटल इस बैग्स ऑफ शुगर का वेट क्या हो जाएगा? 6 into 9.81. Can you calculate this answer? 6 into 9.81. This comes out to be 58.9. बेटा ये तीनों bags of sugar का अगर मैं weight लगाऊं तो this comes out to be 58.9. Can you realize this weight of the bags of sugar will cause the plank to turn in which direction? बेटा ये weight of the bags of sugar will turn the plank in which direction? Anti-clockwise direction. Can I calculate the anti-clockwise movement? Anti-clockwise movement निकाल सकता हूँ जी सर. Bags of sugar का weight क्या है? 58.9. Distance क्या है? 80 centimeter. Let's convert it into meter. 0.8 आ गया. Okay. Clockwise movements किस तरह निकालूंगा? If you realize this is the weight of the suitcase multiplied by the distance, that is 90 centimeters, 0.9 meters कर दिया हमने इसको. तो आप इसको कर दो, clockwise movement is equals to weight into 0.9. Lastly, do you realize that the plank is balanced? अगर plank balanced होगा तो बेटा clockwise movements will be equal to anti-clockwise movements. Simple. Equate कर दो. Clockwise movements is equals to anti-clockwise movements. W into 0.9 is equals to anti-clockwise 58.9 into 0.8. Can you calculate the weight? Weight निकाल सकते हो. 58.9 into 0.8 divided by 0.9. This comes out to be what? 52.4 आ गया आपका. Weight comes out to be 52.4 Newton. Can you realize that this weight of 52.4 Newton is much less than the maximum weight? बेटा ये जो सूटकेस का weight आया है, this is less than what? Let's create a partition here.
This weight of suitcase 52.4 is less than 67 Newton. Hence, the suitcase doesn't exceed the maximum allowed weight. The maximum allowed weight. Easy peasy, lemon squeezy, आगे बढ़ते हैं. चलो जी. A tall bus is tested for stability. Okay. Figure 2.2 shows the bus on a slope. The center of gravity of the bus is marked. ठीक है भाई, ये center of gravity of the bus है in the middle. State what is meant by the center of gravity of an object. बेटा center of gravity of an object का क्या मतलब होता है? A point where the entire weight, where the entire weight of an object, of an object seems to be acting, seems to be acting. Easy peasy. अभी वेट किस तरह एक्ट कर रहा होगा? Somewhat like this, vertically downward like this. When the slope is made very steep, the bus falls over by rotating over point P. Explain why the bus falls over. भाई बस क्यों फॉल ओवर करेगी? देखो बेटा, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाता है. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. एनी ऑफ योर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाएगा अगर उसका वेट, अगर उसका वेट क्या कर जाए, उसके बेस एरिया से बाहर निकल जाए. नाउ सर व्हाट इज बेस एरिया? दिस थिंग इज द बेस एरिया. दिस कोन विल टॉपल. ये कोन जो है वो गिर जाएगा if the weight of this cone starts to act outside the base area. So you can write this key point. An object topples if the weight starts to act outside the base area. Outside the base area. बेटा अगर बेस एरिया के आउटसाइड आपका वेट चले जाएगा तो द ऑब्जेक्ट टॉपल्स. तो आप ये लिख लोगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लोगे. द वेट goes out, या the weight moves out, या the weight goes out, the weight moves out of the base area, ये लिख दो. ठीक है. The weight falls outside the base area. This generates, this generates what? This generates anti-clockwise moments. Hence, the object or the bus topples over. Easy. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. A battery, a pulley, and a motor are used to lift a load as shown in figure 3.1. ठीक है, एक बैटरी है, एक मोटर है, एक लोड है. This is used to lift a load as shown in figure 3.1. Describe the transfers between energy stores that occur as the load is lifted. अच्छा, कौन से एनर्जी ट्रांसफर अकर करेंगे as the load is lifted? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर, बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल energy. So this is a 3 marker question. You will probably have to mention 3 types of energies. First of all, battery की chemical energy gets converted into what? Gets converted into electrical energy of the motor. बैटरी की केमिकल एनर्जी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ. केमिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड है? बैटरी में. This chemical energy of the battery gets converted into electrical energy of the motor. This further gets converted into what? This further is utilized to lift this load upwards. तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये? This will get converted into gravitational potential energy of the load. Simple. आगे बढ़ते. The efficiency of the motor, pulley and load system
इज लेस देन 100%। अच्छा जी, एफिशिएंसी जो है वो आपकी लेस देन 100% है। By comparing the input energy and the useful output energy, explain why the efficiency is less than 100%. बेटा हमने explain करना है why the energy is less than, or why the efficiency is less than 100%. We have to use these two terms. बेटा हम क्या कह सकते हैं, efficiency 100% से less है तो what can we say? The useful आउटपुट एनर्जी, मतलब आउटपुट में जितनी आपको एनर्जी रिसीव हो रही है दैट इज मच लेस कंपेयर टू द इनपुट एनर्जी, दैट्स व्हाई एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। और बेटा एफिशिएंसी लेस देन 100% होने का रीजन क्या हो सकता है? कि लेट्स से आप इनपुट पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, दिस इज योर इनपुट एनर्जी, some amount of it is utilized to do useful output and the other is wasted as heat। एफिशिएंसी लेस देन 100% है, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी इनपुट एनर्जी इज मच मच ग्रेटर कंपेयर टू द आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेट्स से इनपुट एनर्जी 100 जूल्स है तो आपकी आउटपुट एनर्जी 60 जूल्स है। द 40 जूल्स ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट। दिस इज वाई एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। लेट्स फर्दर रीड आउट। एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज इन लिफ्टिंग द लोड। हमें बताना है हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज इन लिफ्टिंग द लोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains constant। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains constant। नाउ हाउ डज इट अप्लाइज टू लिफ्टिंग द लोड? बेटा देखो, लिफ्ट जब आप लोड को लिफ्ट कर रहे हो तब भी टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रह रही है। किस तरह से? लेट्स से आप बैटरी से 100 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, इस 100 जूल्स ऑफ एनर्जीज में से लेट्स से 60 जूल्स जो है वो यूज अप हो रही है टू लिफ्ट द लोड। जो रिमेनिंग 40 है वो कहाँ गई? 40 इज वेस्टेड एज हीट। सिंपल। सो यू कैन राइट दिस, you can explain this entire thing here. You can say energy from the battery, energy from battery slash power supply is equals to what? Energy from the battery slash power supply is equals to what? Useful output energy, that is the gravitational potential energy gained by the weight, plus the heat wasted is equals to gravitational potential energy, potential energy, potential energy gained by weight, gained by weight, plus energy wasted as heat। इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। द इनपुट पावर टू द मोटर इज दिस, ठीक है, आपके पास इनपुट पावर आ गई, पी आई इज इक्वल टू 15। The motor is used for 20 seconds. Okay, you have the time as well. Perfect. The efficiency of the motor is this. आपके पास efficiency आ गई. You have to calculate the energy supplied to the load. You have to calculate what? Energy output. Energy output किस तरह निकालेंगे? Easy peasy. First of all, energy input निकाल लें. Yes. We remember that energy is equals to what? Energy is equals to power into time. Power given input, yes, 15. Time given, yes, 20. This comes out to be what? This comes out to be, 1 second, 300 joules. आपकी एनर्जी इनपुट क्या आ रही है? 300 जूल्स। अब एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी की क्या वैल्यू है? 60। ओके,
60 is equals to energy output divided by energy input, that is 300 into 100 multiplied. Get your answer, 60 into 300 divided by 100. This comes out to be 180 joules is equals to your energy output. Simple as that. आगे बढ़ते हैं. Evaporation of water from the surface of skin causes cooling. Okay. Describe using ideas about particles how evaporation causes cooling. तो क्या लिखोगे? Molecules, molecules greater with greater kinetic energy escape from the surface. Escape from the surface. Hence, the average kinetic energy of molecules decrease, causing the temperature to decrease. Causing the temperature to decrease. Simple. State one difference between evaporation and boiling. Evaporation और boiling के बीच में एक difference हमने बताना है. What is the difference that we can tell? You can say evaporation happens at the surface, happens at the surface, whereas boiling happens throughout the liquid. Easy peasy. इसमें क्या complicated बात है? Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. When a refrigerator is switched on, ठीक है, जब एक refrigerator switch on किया है हमने, cooling coils placed at the top of the space inside the refrigerator becomes cold. अच्छा जी, ये सारी की सारी cooling coils जो है ना, ये cold बन जाती हैं. Okay. Okay, these are your cooling coils. Perfect. This causes a convection current which cools the air inside the refrigerator. The refrigerator is shown in figure 4.0. अच्छा जी, ये कूलिंग कॉइल्स की वजह से कन्वेंशन करंट जनरेट होता है. दिस कॉजेज द एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर टू कूल डाउन. ओके. Explain how the cooling coil causes a convection current in the air inside the refrigerator. 2 marker question. Let me give you a 3 marker answer for this. बेटा देखो क्या होगा. द एयर सराउंडिंग द कूलिंग कॉइल विल बिकम कोल्ड. ये सारी की सारी जो एयर है सराउंडिंग द कूलिंग कॉइल विल बिकम कोल्ड एंड इट विल बिकम मोर डेंस. इट विल फॉल टू द ग्राउंड. Hotter, less dense air from the ground will rise to the top, developing a convection current. तो ये क्या है? Hot, less dense air rising. और दूसरी वाली एयर कौन सी है बेटा? दिस इज cold, more dense air falling. Yeah, sinking. So let's write it as well. Let's write it. You will say the cooling coils, the cooling coils cause the surrounding air, cause the surrounding air to become cooler and more dense. Hence, they sink to the ground. To the ground. Hot, less dense air rises to the top. Rises to the top. Developing convection currents, you can further write it. The food in the refrigerator is initially at a temperature of 20 degrees centigrade. अच्छा जी, initial temperature of food क्या है? 20 degrees centigrade. The food has a mass of this. Okay, this is the mass of food. The specific heat capacity of food is this. Okay. What is the final temperature of the food after 1
160,000 joules of thermal energy is removed from it. Now, this is very, very important. You have the initial temperature, you have the specific heat capacity, you have the mass, you have the heat. But can you realize this is the heat removed? जब भी आपकी हीट रिमूव हो रही है या हीट इजेक्ट हो रही है, you will write that with a negative sign. You will say Q is equals to mc delta T. When you will write 160,000, you will write it with a negative sign. Sir, why? Because बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी इज रिमूव्ड, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया. मास क्या है 3.6, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 3000. ओके, व्हाट विल बी योर चेंज इन टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज 20. Can we calculate the answer? Yes, we can do that. Let's solve it step by step क्योंकि कुछ लोग मैथ्स में भी कमज़ोर होते हैं. So let's solve it step by step. Let's bring it to the downside. 3.6 into 3000. And this comes out to be temperature final minus 20. Minus 1600. 0 divided by 3.6 into 3000. Okay. Uh, let's make a column here. This is minus 14.8 is equals to TF minus 20. Take this to the other side. Minus 14.8 plus 20 is equals to TF. Okay, क्या आंसर आ जाएगा? This comes out to be 5.2 degrees centigrade is your final temperature. Simple as that. Let's further move ahead. Figure 5.1 is a diagram showing the arrangement of air particles as a longitudinal wave passes through them. Okay. On figure 5.1, mark the center of compression with letter C and mark the center of rarefaction with letter R. Compression क्या होता है? जब molecules closest together होते हैं C. Rarefaction क्या होता है? Where the molecules are furthest apart. R. Simple. Describe the difference between a compression and a rarefaction. I have already told you. In a compression, the molecules are closest together. Molecules are closest together and experience maximum pressure. Maximum pressure. However, in a rarefaction, molecules are furthest away and experience minimum pressure. Simple. Let's further move ahead. In a ripple tank, a water wave is produced by a wooden bar moving up and down on the surface of water. The wooden bar completes 45 oscillations in 1 minute. Okay. Calculate the frequency of the wave produced. Frequency का मतलब क्या होता था? Definition क्या होती थी? Do you remember? Number of oscillations in 1 second. Number of oscillations in 1 second is known as frequency. बेटा 45 oscillations हो रही हैं in 1 minute और you can say 60 seconds. 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन होंगी? प्लेस एन एक्स here. Ratio method. X is equals to 45 over 60. That is equals to 0.75 hertz is your frequency. Simple. The frequency of the water wave is increased by moving a wooden bar up and down more quickly. Suggest what happens to the speed and what happens to the wavelength of the waves produced. बेटा स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट या फिर सेम रहेगी. What will happen to wavelength? Let's see. V is equals to f lambda. Frequency को नीचे ले आओ. V over f is equals to lambda. Velocity क्या है? Constant. You can replace it with a direct proportionality sign. Now, if your frequency is increased, अगर आपकी frequency increase हो रही है बच्चे, wavelength क्या होगी? Reduce या decrease.
Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते. The crest of the water wave move into a shallow region. Okay, so you are moving from a deep region into a shallow region. बेटा जब भी आप डीप से शैलो में मूव करते थे तो क्या होता था? योर वेवलेंथ यूज टू decrease, your speed used to decrease, your frequency used to remain same, and your wave fronts चौथी प्रॉपर्टी क्या होती थी? वेव फ्रंट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये लिख लो यहाँ पे. वेव फ्रंट्स बेंड away from normal, away from normal. Okay, so first of all what will we do? First of all what will we do? We will first of all start making the normals. Let's zoom in a bit here. Huh. First of all, let's start making the normals. A normal is a 90-degree line on the barrier like this. Like this. This is a normal. 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 What will happen? Your rays will bend away from the normal like this. Oh, I have bended it too much away from the normal. Like this. Like this. Like this. Like this. Like this. Can you see the wavelength has also reduced? Wavelength आपने reduce दिखानी है. 1 mark for this. You have to make the wavefronts bend away from the normal, and you have to make a neat and clean diagram for the third marks. Let's move on to part C. State what is meant by diffraction of a water wave. बच्चे diffraction का क्या मतलब होता है? What is meant by diffraction of a water wave? Diffraction of a water wave का क्या मतलब होता है? Spreading out or spreading out of a wave as it passes through a narrow gap or a small gap. You can say spreading out of spreading out of water waves, spreading out of water waves, yeah, spreading out, bending out, spreading out of water wave as they pass through a narrow gap slash small barrier. Oh, I have a place 3 L's here. Small barrier. Simple. Let's further move ahead. आगे बढ़ते. A student sets up a circuit to determine the resistance of a length of a wire. ठीक है, resistance of length of wire निकालनी हमने. The circuit contains a battery of unknown EMF, a length of wire used to make a resistance X. ठीक है, हमने length of wire से resistance X बना लिया है. An ammeter, a voltmeter, and a variable resistor R. Figure 6.1 shows the circuit diagram. Okay. On figure 6.1, complete the circuit diagram by adding one voltmeter and one ammeter in the suitable places to show the determination of resistance X. बेटा resistance X किस तरह निकालोगे? By placing a voltmeter in parallel like this and placing an ammeter in series like this. Resistance X किस तरह निकलेगी? By placing a voltmeter in parallel, ammeter in series. Simple. Explain how X and R act as a variable potential divider. बहुत ही अच्छा question. How X and R behave as a variable potential divider. How will you answer this? बेटा अगर आप देखो, first of all, if you realize the EMF of the battery is equals to what? Potential difference of X plus the potential difference of R. तो ये तो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा. You will say EMF of the battery is equals to what? Is equals to the potential difference across X plus the potential difference across R.
अब ये तो आपने बता दिया, बट हाउ डू वी वेरी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट? बेटा ईच कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह वेरी होगा? यू विल से as resistance R increases, what will happen? Voltage across R increases. If voltage across R increases, the voltage across X decreases. This is how you can vary the voltage across each component. This is how you can vary the voltage across each component. So you can say as R increases, the voltage across R increases and voltage across X decreases. However, as R decreases, the voltage across R decreases and the voltage across X increases. तो बेटा ये जो लास्ट दो पॉइंट्स लिखे हैं हमने, उसमें हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं. इफ यू वेरी द पोटेंशियल, यू आर बिहेविंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. सिंपल. लेट्स further move ahead. The student determines the resistance of the resistor X for five different lengths of the wire, making it. The length of the wire ranges from 20 centimeter to 60 centimeter. Okay. हमारे पास wires हैं from 20 centimeter to 60 centimeter and we are examining the resistance of that. The type of the wire and the cross-sectional area of the wire are kept constant. Okay. Type of wire and cross-sectional area are kept constant. Figure 6.2 shows the result of the graphs. Okay. ये graph का result है. Okay. State the relationship between the resistance of the wire and the length of the wire. कैन यू सी बच्चों, जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है. सो यू कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. एज यू कैन सी जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है बच्चों, रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल. Calculate the current in a 90 centimeter length of the wire when there is a potential difference of 9 volts across it. Okay. बेटा हमने करंट निकालना है अक्रॉस 90 सेंटीमीटर ऑफ द वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा गौर करेंगे. अगर आपकी वायर 60 सेंटीमीटर की है, इफ योर वायर इज ऑफ 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? हाँ जी, वायर अगर 60 सेंटीमीटर की है बच्चे, तो रेजिस्टेंस क्या है? लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 3.6. अगर वायर 60 सेंटीमीटर की है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 3.6 ओम्स. वायर 90 सेंटीमीटर की होगी बेटा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? एक्स. कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स कम्स आउट टू बी 90 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 60. क्या आ रहा है आंसर? 90 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 60. दिस कम्स आउट टू बी 5.4. ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई फॉर द 90 सेंटीमीटर वायर. यू हैव द वोल्टेज एज वेल. करंट निकाल सकते हो? यस, वी इज इक्वल्स टू आई आर लगा दें सर. वोल्टेज क्या है? 9. रेजिस्टेंस हमें पता है 5.4. कैन यू कैलकुलेट द करंट? करंट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 5.4. व्हाट डज दिस कम आउट टू बी? 9 divided by 5.4, this comes out to be 1.7 ampere as your current. Simple. आगे बढ़ते हैं. The potential difference across the wire making the resistor X is kept constant for all measurements of resistance. Describe the relationship between the current in the wire and the length of the wire. बेटा अब ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है अगर आपको एक चीज पता हो. All of you must know, yeah, must remember, yeah, if you don't remember, all of you that have studied O levels or IGCSE physics with a little brain cell, you might remember that resistance is inversely proportional to current and resistance is directly proportional to length. Can I equate both of these equations together? Yep, I can do that. 1 over current is directly proportional to length. Which type of relationship is this? ये कौन सा relationship आ गया है? Inverse proportionality. If the current increases, the length decreases. So you will say this is an inverse proportionality relationship. As length increases or length decreases, current increases, length increases, current decreases.
State how the resistance of a wire depends on the cross-sectional area of the wire. Okay, so now we have to tell resistance and area ka relationship. Area and resistance are also inversely proportional. Inversely proportional. Simple. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं अब. Now let's see this. Figure 7.1 shows an alternating current power supply connected to a transformer. Okay, we have an alternating current power supply connected to a transformer key primary coil. Okay. Explain how an alternating current in the primary coil produces an alternating output voltage in the secondary coil. बेटा एग्जामिनर सिर्फ ये कह रहा है कि पावर सप्लाई में अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो आउटपुट में आपके पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे आ रहा है. यू विल से द ऑल्टरनेटिंग करंट द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द पावर सप्लाई और इन द प्राइमरी कॉइल इन द प्राइमरी कॉइल generates changing magnetic field generates changing magnetic field in the primary coil in the primary coil. These magnetic fields cut with the secondary coil producing an alternating output voltage. Simple as that, nothing complicated. An alternating output voltage, easy peasy. आगे बढ़ते हैं. A student uses a voltmeter set on a 0 to 10 meter range to measure the input and output voltage. He obtains the value shown in figure 7.1. बेटा स्टूडेंट एक वोल्ट मीटर यूज कर रहा है जिसकी रेंज क्या है 0 से 10 वोल्ट्स. ओके, अगर इनपुट वोल्टेज 1.2 है आउटपुट क्या हो जाएगा 2.4. अगर इनपुट 2.3 है आउटपुट क्या हो जाएगा 4.6. व्हाट इज हैपनिंग? इनपुट का डबल कर लोगे तो आउटपुट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. लास्ट वाले में कोई रीडिंग नहीं आ रही. वेरी स्ट्रेंज. लेट्स सी व्हाई. Suggests why no output reading is obtained with this voltmeter when the input is 6.4. बेटा अगर इनपुट 6.4 है आउटपुट क्या हो जाएगा 12.8 वोल्ट्स. अब अगर आप 0 से 10 वोल्ट्स वाला वोल्टमीटर यूज कर रहे हो कैन यू सी इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 0 से 10 वोल्ट्स वाले वोल्टमीटर की मैक्सिमम लिमिट क्या है 10. आपकी रीडिंग क्या है 12.8. कभी भी शो नहीं होगी. सो यू विल से the reading of output voltage, the reading of output voltage is beyond the voltmeter scale, beyond the volt, or the voltmeter cannot measure this output voltage. Simple. आगे बढ़ते हैं. The number of turns of the primary coil is 48. ये number of turns of the primary coil आ गई. You have to calculate the number of turns of the secondary coil. How will you do that? Vp over Vs is equals to Np over Ns. बेटा प्राइमरी वोल्टेज क्या है 1.2. सेकेंडरी वोल्टेज क्या है 2.4. ओके, 1.2 डिवाइडेड बाय 2.4. प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल्स क्या है 48. सेकेंडरी नंबर ऑफ कॉइल्स क्या है वी डोंट नो. 1, 2. Number of secondary coils comes out to be 48 into 2. That comes out to be 96. Simple as that. आगे बढ़ते हैं. The student uses an oscilloscope to display an alternating output voltage from the transformer. Okay. You have to display an alternating output voltage from the transformer. बेटा आपने alternating voltage display कराना है from the transformer. Okay. Figure 7.2 shows the front of the
oscilloscope before it is connected to the transformer. ठीक है, ये front of the oscilloscope है before it is connected to the transformer. Okay. When the oscilloscope is connected to the output of the transformer, a trace representing the alternating output voltage is displayed on the screen. Okay. On figure 7.2, draw a trace representing the output voltage on the screen. अच्छा जी, बेटा हमने कोई ऐसा ट्रेस बनाना है जो ऑल्टरनेटिंग आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करे ऑन दिस स्क्रीन. What I can do is I can make a trace like this. Now I'm very bad at drawing, but let's try. Let's try. Oh, let's say maximum value हो गई. Okay. Yep, this is an alternating trace. I have tried my maximum best to make a good curve. Describe how to use the trace to measure the maximum value of output voltage. बेटा अब ये जिन्होंने मुझसे ओ लेवल्स पढ़ी है उन्हें पता होगा कि how do we use it. How do we use the CRO to find the maximum value of the output trace? You count the number of boxes from the mean position. Count the number of boxes from the mean position to the peak. This comes out to be 1. So let's first of all write this. First of all, write this key point. Count the number of boxes from mean position, middle line, whatever you want to say, from mean position to peak. Multiply the number of boxes by what? Multiply the number of boxes by the Y gain setting. Write it. Multiply the number of boxes by the Y gain setting. Simple as that to get the maximum value of the voltage. आगे बढ़ते हैं. Plutonium 239. अच्छा, plutonium 239 is an isotope that is used as a fuel in some nuclear reactors. Okay. State the name of the particles found in the nucleus. अच्छा, कौन से particles found होते हैं in the nucleus? Obviously neutrons plus protons of plutonium. And state how many there are of each type. बेटा प्लूटोनियम के न्यूक्लियस में एक तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं? देखो प्रोटॉन्स तो आपको ये डाउन साइड नंबर से ही मिल जाता है. दिस इज द प्रोटॉन नंबर. हाउ मेनी प्रोटॉन्स डज द प्लूटोनियम न्यूक्लियस हैज? 94 प्रोटॉन्स. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? बेटा ये जो टॉप साइड पे नंबर होता है दिस इज नोन एज व्हाट? मास नंबर. और ये क्या होता है? दिस इज अ समेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन क्या है? 239. 239 minus 94 will give you the number of neutrons. This comes out to be what? 239 minus 94. This comes out to be 145. Number of neutrons कितने हो गए? 145. Simple, easy peasy, nothing complicated. Figure 8.1 shows the nuclear fission process that occurs within the fuel rods of the nuclear reactor. अच्छा जी, ये nuclear fission reaction है that occurs within the fuel rods of the nuclear reactor. Okay. Explain how the fission process produces a chain reaction. How the fission process produces a chain reaction. बेटा ये evident है. अगर कोई बच्चा गौर से ये डायग्राम को देखेगा ना तो उसको एविडेंटली समझ आ जाएगा व्हाई फिजन इज अ चेन रिएक्शन. इफ यू सी, ये रिएक्शन स्टार्ट क्यों हुआ था? व्हेन अ न्यूट्रॉन हिट अ प्लूटोनियम न्यूक्लियस. प्लूटोनियम ही है ना नाम इसका? प्लूटोनियम, हाँ. ये रिएक्शन ऑफ फिजन स्टार्ट क्यों हुआ था? व्हेन अ न्यूट्रॉन हिट द प्लूटोनियम न्यूक्लियस. Can you realize in the product you have 3 more neutrons? बेटा प्रोडक्ट में आपके पास 3 more neutrons हैं. आप इनके साथ 3 और प्लूटोनियम कनेक्ट कर दो. फिजन रिएक्शन जिंदगी भर चलता रहेगा.
इनसे जो 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे उनके साथ फर्दर प्लूटोनियम कनेक्ट कर दो. Fission reaction is a chain reaction that lasts until eternity. इसको लिख लेते हैं. The reaction was initiated was initiated when a neutron hit the plutonium nucleus. Plutonium. I keep on forgetting the spelling. Plutonium सही लिखा है. Plutonium nucleus. The reaction was initiated when a neutron hit the plutonium nucleus. Okay. In the products, we had three more, or you can further rephrase it in correct grammar. चलो इसको सही तरह लिखा देता हूँ. The reaction was initiated when a neutron hit the plutonium nucleus. In the products, we have three more neutrons, which can further initiate fission reactions. Simple. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. Explain how the control rods, how are control rods used to increase and decrease the rate of the chain reaction in a nuclear reactor. बेटा ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं वो इंक्रीज डिक्रीज किस तरह करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. कंट्रोल रॉड्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, hence decreasing the rate of reaction. बेटा कंट्रोल रॉड्स क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है न्यूट्रॉन्स को. यू कैन राइट कंट्रोल रॉड्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, hence decreasing the rate of reaction. Decreasing the rate of reaction. Simple. आगे बढ़ते बेटा. Let's move ahead. Plutonium 239 decays by an emission of an alpha particle. State two differences between an alpha and a beta particle. Differences क्या होते हैं alpha और beta particle में? You can first of all write alpha particle has a charge of +2, whereas beta particles have a charge of -1. Second difference क्या होगा? Alpha particles can be stopped by cardboard slash, I have written the spelling of cardboard wrong. Can be stopped by a cardboard slash paper. However, beta particles are stopped by aluminum and not paper. Easy peasy. आगे बढ़ते हैं. Alpha particles from the radioactive source are detected in a cloud chamber or a spark counter. Draw a label diagram of either a cloud chamber or a spark counter. Label the position of the radioactive source with an S. Let me draw the diagrams of both of them. क्लाउड चेम्बर भी बना देता हूँ, स्पार्क काउंटर भी बना देता हूँ फॉर द ईज ऑफ यू गाइज. अच्छा जी, दीज आर द डायग्राम्स फॉर क्लाउड चेम्बर एंड स्पार्क काउंटर. इफ ever I have to draw in the examination, I prefer a spark counter because that is much easier to draw. But let me show you how to draw everything. If you have to draw a cloud chamber, first of all you have to make sure कि आपने alcohol soaked rings बनाई हुई हैं. ये रही है alcohol soaked rings. Second thing that is very important in a cloud chamber is this cooling source. You must make this dry ice. Third thing that was necessary here was a radioactive source. ये भी हमने बना दिया. ठीक है.
And the fourth thing which you can make is a lamp, and the fifth thing is a lid. ये पांच चीजें क्लाउड चेंबर में होना जरूरी है। कौन सी? Alcohol soaked rings, secondly a cooling source, thirdly the radioactive source, fourthly the lamp, fifth the plastic lid. Okay, now if you had drawn a spark counter, अगर आपने एक spark counter बनाया होता तो आपके लिए भी तीन चीजें या चार चीजें फिर से important है। First of all, you must make this wire, then you make this wire with holes, that is known as a metal gauze. Then you must make this high voltage supply of 5000 volts, 0 volts, and a source that is really, really important. That is the fourth thing that you need to draw in a spark counter. स्पार्क काउंटर में कौन सी चार चीजें बनानी है? वायर, गॉज, हाई वोल्टेज सप्लाई एंड रेडियो एक्टिव सोर्स। सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। अच्छा जी। The life cycle of a star begins with a large cloud of dust and gas. This is known as what? Nebula. Okay. Which collapses. Five stages of the life cycle of a very massive star. Very massive star का मतलब क्या है? Red supergiant. Okay. Okay. Place these stages in table 9.1 in the order in which they occur. सबसे पहले कौन सा होता है protostar? Easy peasy. For this, you can refer the space physics key lecture video. Then you have a stable star. This is also known as a main sequence star. Then you have the red supergiant. रेड सुपर जायंट के बाद क्या होता है? फ्यूल खत्म हो जाता है, एक एक्सप्लोजन होता है, दैट इज नोन एज सुपरनोवा। देन यू हैव द ब्लैक होल। ओके ओके ओके, let's further read it out. The original collapse of the cloud of dust and gas that formed the sun was caused by an inward force. State the name of the inward force. Gravitational force of attraction. Gravitational force ही लिख देते हैं सिर्फ। Okay. Further collapse is prevented by an outward force. The sun will remain in the stable stage of this life cycle for a few billion years. State what causes the outward force. Outward force किस वजह से आती है? Outward force is there due to high temperature and pressure. Outward force बच्चे किस वजह से आती है? Due to high temperature and pressure. Simple. Let's further move ahead. One of the first supernovas ever observed is known as SN 185. It was formed from the explosion of a star in the Milky Way galaxy. The remnants of SN 185 are at a distance of 8,200 light years from Earth. State what is meant by light year? Distance traveled by light in 1 year. Simple, by light in 1 year. Easy. आगे बढ़ते। State the time that passed between the explosion that formed SN185 and the electromagnetic radiation from the explosion reaching Earth. बेटा कितना टाइम लगता है for SN185 to explode and the radiation to reach the Earth? 8200 years. Simple. ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर, 8200। Let's further move ahead. A recently observed supernova is SN2014 capital G. Okay. The remnants क्या होता है? Remaining parts of SN2014 capital J, sorry, are 12 million 12 million light years from Earth outside the Milky Way. Okay. There is no redshift seen in the electromagnetic radiation from the remnants of SN185, but a large redshift is seen in the electromagnetic radiation from the remnants of SN2014G. एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद होना चाहिए कि रेड शिफ्ट इंक्रीजेज विथ डिस्टेंस। द फर्दर अवे यू आर फ्रॉम द अर्थ द लार्जर द रेड शिफ्ट। कैन यू रियलाइज बच्चों, कैन यू रियलाइज एस एन कहाँ गया? एस एन, हाँ, SN185 कितने डिस्टेंस पे है अर्थ से? 8200 लाइट ईयर्स। However, ये जो दूसरा वाला सुपरनोवा है SN2014 कैपिटल जी, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मिलियन लाइट ईयर्स। कौन सा ज्यादा दूर है? ऑब्वियसली इफ यू हैव बेसिक मैथ्स, दिस इज फर्दर अवे, दिस विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर रेड शिफ्ट,
Hence, this has a significant redshift. You can write this here. The SN2014 capital G is further away from the sun. Hence, it experiences what? It experiences a larger red shift. Simple. Let's see this. Most of the atoms found in the early universe were hydrogen and helium. Okay. The universe now contains atoms of heavier elements. Explain how heavier elements are formed. बेटा heavier elements कैसे form होते हैं? Due to fusion of the lower mass वाले elements. और ये कहाँ पे occur करता है? This occurs during the supernova stage of a star. You will say the heavier elements are formed due to due to due to the fusion of hydrogen and helium. This occurs during the supernova stage of a star. Simple, nothing complicated here. That's it for this paper. We have done May, June 2025, paper 21. If you have any queries, you can ask in the comments below.